Okay, just describe your case. Okay, so 47 years old male, known case of diabetes mellitus type 2, known case of hypertension since 3 years, non-compliant to medication. Naswar addict came to ER, presented with the complaint of cardiac chest pain or cardiac typical chest pain for one day associated with shortness of breath on exertion, function class 2. On arrival, ECG showed T wave inversion in anterior lead with a good progression of R wave, LVH strain pattern. And on arrival, troponins were negative Mhm. with the vitals of BP 120/70, pulse 62 BPM, regular, normal volume, saturation of 99% on room air, and respiratory rate of 16, afebrile. Examination finding? Yeah, just if any positive. No, If no chest was positive, clear, normal then vesicular breathing, bilateral. okay. So where you keep this patient in terms of diagnosis and workup? Here you have a patient who's relatively young. 43 is a young with some risk factors and according to presenter a typical chest pain. So how you go about? So, if the patient is having risk factors for the coronary artery disease, as my colleague described, that he's having diabetes as well as hypertension, and if the patient is having, the history is the most important thing, and if the patient is presented with the typical angina Mhm, symptoms, mhm, so I will definitely put this patient in the high likelihood of coronary artery disease, and I will mhm. go accordingly for that. What you'll do? Okay. As if the patient is still complaining of chest pain, if I'll see this patient in ER, and if the patient is complaining of chest pain, and if I will not see any significant STD changes in the ER, then I will go for serial ECGs and the serial troponins in this patient. Mhm. But Uh, he's already gone through that phase. His troponins are negative and he's having fixed kind of changes which you are seeing on ECG. yes. So now how to decide what need to be done for him? So definitely, I will go for any. If the patient is currently pain free right now, then I Mhm. will go for any stress testing in this patient. Okay. So you are thinking of assessing his Chest. risk further. You have to have some objectives in your mind. Whenever you are dealing a patient with chest pain and some STT changes with a negative troponin, and STT changes are not categoric of ischemia. Categoric STT changes of ischemia are typical chest pain with ST elevation. Because in that case, even you don't wait for troponins or anything. You are almost 90-95% of the time confirmed that this is some transmural infarct going on. That's why you take these patients to the cath lab as early as possible. Although sometimes even ST elevation can be due to other reasons as well. But what I am mixing with that ST elevation, typical angina or typical classical ischemic type chest pain. So even just ST elevation is not enough. So in acute assessment, the important thing is History. history. So put your every effort to judge your patient's chest pain. Is it of typical ischemic type or not? Here you have, because I've seen the ECG, there are very deep T inversions. Now, these kind of changes are very unlikely without troponin positive, isn't it? So then, because you are having discrepancy here, Between. very significant, I see, either they may be old changes or maybe something alternative. So you have to think of alternative things as well, which may present as an ACS. What are those alternatives? Sir, if the patient is complaining of chest pain, and the patient alternative diagnosis in this patient might be like hypertrophic cardiomyopathy. Yes, how come young people, deep teen version changes, and sometimes even they can have resting chest pains as well because of that very high LVH. myocardium or Higher LVH. myocardium. So let's discuss few things about
not just ACS, any ischemic patients you are dealing with, either in OPD, ER, stable or unstable. How you go about that? You are thinking of doing a stress test on this patient. You may do CT angio, you may do coronary angio, you may can do thallium on this patient, you can do ETT. So how to decide about these things in your patient who's coming to you with? First thing is to judge with symptoms and whatever things are available, your own likelihood of disease, your own perception. Likelihood किसे कहते हैं? Pre-test probability, or how much you are thinking that this is ischemic heart disease. यानी पहला जवाब अपने आप को ये देना होता है, am I dealing with something coronary related or non coronary related? यहाँ से रास्ता बदल जाएगा. If you are dealing with someone whose symptoms are more likely of coronary and he is moderate to high risk, then there is no point in doing stress testing, because stress testings are done with two objectives: diagnosing and risk assessment. These are the two objectives of doing stress test in a patient who's coming to you with ACS or stable or CCS. अभी तो हम डिस्कस करें एक्यूट चीज, तो एक्यूट के हवाले से अगर आपके सस्पेशन स्ट्रॉन्ग है कि ये सिम्टम्स इस्केमिक टिपिकल थे, and if he has 2-3 episodes of resting chest pain in last 24-48 hours with that kind of STT changes, then stress test is Exclude. if there would have been a patient who's normal ECG with the pain which is plus minus, Okay. not clearly showing that it's ischemic, but some features may be giving an idea that it may be ischemic. This is a very, you are uncertain about diagnosis as well as risk. So these are the things which are subjective assessments: history, overall risk. But let's discuss overall status. How often you see a CC? Have you do you know the classes of CCS? 6 category of CCS in European Society of Cardiology. They have divided CCS presentation into 6 different features. किसी को पता है कि CCS का मरीज आपके पास आता है, जो ओपीडी में जैसे लोग आते हैं, तो वो किस किस तरह के हो सकते हैं, और उनको उन कैटेगरीज में आपको डालना होता है, एंड दैट यू कैन जज with taking some history. If those who have done my private OPD, your points give me an idea that what category I'm dealing with. You may have seen there is a portion of first symptoms. So I want you to judge first the symptoms. Symptoms क्या बता रहे होते हैं? दो चीजें. Is he having any ischemia ongoing or not? What you are assessing first, the patient skill. That's the first thing to judge. और यही अंदाज प्रेजेंटेशन का भी होना चाहिए that this patient at present is asymptomatic on routine activity, or this patient is having at present CCS1 angina, CCS2 angina, CCS3 angina. So first thing to be judged in a patient who's coming to you is his symptoms. Is he having any ongoing ischemic symptoms or not? So you may come up with 2 categories: no present symptoms or symptoms. If he is having symptoms, then it's your responsibility to judge, are they ACS or CCS? ये कैटेगरी पे, क्योंकि ACS का एल्गोरिदम अलग है, CCS का एल्गोरिदम अलग हो जाएगा. And how you judge that? Resting, severity, recent increase in severity, frequency, or resting. So that means this patient is now going into ACS basket. He's not CCS. हाँ, 2-3 या कभी कभी 4 के सिम्टम है जो पिछले 4 महीने 6 महीने से हैं. सो आज तो आप सुन रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें तो आप सिर्फ चेस्ट पेन लिख देते हैं. If you are categoric, you may have seen some of my card. I personally have written CCS2 angina, CCS1 angina. And that's the art to be learned. How
in simple 2-3 words you can judge your patient and keep that record forever. So judging, if you think the chest pain is plus minus, then just keep in mind chest pain with plus minus. यानी ना डायग्नोसिस क्लियर है, जब डायग्नोसिस क्लियर नहीं है तो रिस्क तो अभी बात की बात होगी. रिस्क कब असेस किया जाता है? व्हेन यू आर क्लियर दैट दिस पेशेंट हैज एंजाइना टिपिकल. तो पहला स्टेप सिम्टम असेसमेंट. सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक. इफ सिम्टम्स ACS symptoms or ACS certainly is high risk resting symptom. CCS then class. कि भाई 1 2 3 4 और इसी पैटर्न पे आपको नोट डाउन करना होता है. ये then as important risk factors, you told me hypertensive, diabetic, but you haven't told me the status. Diabetes mellitus, on insulin, controlled, uncontrolled, not known, controlled, not known. ये भी बता देगा, ये हमने अपनी तरफ से कि वो पेशेंट है जो चेक ही नहीं करता. So we don't know the status. Same applies to other risk factors. यानी वो काम खत्म नहीं हो जाता हाँ या ना पे. That has an impact of final risk assessment. A patient who's 10 years diabetic, without proper follow-up, without compliance, without anything, is different from a patient who's 1 year diabetic with proper treatment. It has an impact on pre-test disease probability. So that means you have to judge all risk factors, not just they are present or absent. You have to judge this as well. Is your patient properly controlling those risk factors or not? And something about lifestyle as well. चलना फिरना, activity, physical क्या है. Even I personally feel even mental health assessment is also important. Because your everything go in vain if he is not ready to accept your advices. उसका mental level क्या चल रहा है, उसको भी address करना पड़ता है in management plan. कि आपको हर तरह के मरीज पड़ेंगे. डिनाई वाला, फेज वाला मिलेगा, ओवर सेंसिटिव भी मिलेगा, एक्सेप्टेबल है लेकिन लीस्ट बॉदर अबाउट हिज डिजीज, नॉट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज व्हाट कैन हैपन. उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको 2-4 जुमले जज करने के बाद मरीज की मेंटालिटी आपको बताने पड़ेंगे. भाई ये कर, ये हो गया. Then this functional class status will help you in deciding, and the risk factors, everything, what is the further plan of your patient. अभी जैसे आप कह रहे थे रिस्क असेसमेंट में किसी की प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है और उसकी बहुत अच्छी इमेजिंग की जा सकती है. देन इट्स CT एंजियो विद कैल्शियम स्कोरिंग टू जज मर्ज है या नहीं है. और किसी को सिम्टम आ रहे हैं और आप ये जज करना चाहते हैं कि ये सिम्टम्स कितनी डिग्री में है, क्या उसका फंक्शनल क्लास है, देन स्ट्रेस टेस्ट. और उसके ऑलरेडी सिम्टम बहुत ज्यादा हैं तो फिर स्ट्रेस टेस्ट की भी गुंजाइश, बिकॉज हिज प्रेजेंटेशन इज शोइंग दैट ही इज हाई रिस्क, देन कोरोनरी एंजियो. ये चीजें लोगों को पता नहीं है. जिसको आप एंजियो एडवाइस करते हैं वो CT एंजियो करा के आ जाता है. There is a role for CT angio, but not for a severely symptomatic patient. This is for where you are unclear about diagnosis and risk. That is in between patient who has symptom, you are clear that his patient is having disease. Now you are planning conservative or invasive. Then you need some functional assessment. कि भाई इसको जो कुछ भी मर्ज आप कंटेम्पलेट कर रहे हैं ये फ्लो लिमिटिंग है, और फ्लो लिमिटिंग है तो इसकी सिविरिटी कितनी है. बहुत सवीर है तो डायरेक्ट इन्वेजिव, इंटरमीडिएट है तो इनडायरेक्ट असेसमेंट ऑफ रिस्क. इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब जब आप पेशेंट को जज करते हैं, ये तो मैंने उसका प्लान दिया आपको कि असेसमेंट के बाद प्लान क्या होता है. अभी हम अपने उसी कार्ड पे आते हैं जो हम करते हैं. आपने देखा होगा उसमें फिर ये पोर्शन होता है एडमिशंस. एडमिशंस हम ये चाहते हैं कि मुझे पता चले लास्ट 12 महीने के अंदर कोई एडमिशन हुआ है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राई टू डिवाइड योर पेशेंट. एनी ACS विद इन 12 month,
बिकॉज इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन मैनेजमेंट। ये मुझे चाहिए लाजमी। आप मिस कर जाएंगे अगर 3 महीने का कोई एडमिशन आपने लिखा ही नहीं, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा ये एक्सेप्ट करना। मैं फिर उससे पूछूंगा आप कभी दाखिल हुए या नहीं, दाखिल हुए हैं तो कहाँ और कब, ताकि मुझे ये कैटेगरी मिल जाए कि ये पेशेंट 12 महीने से पहले इसको कोई गड़बड़ हुई है या, ये अपने जहन में खुद ये क्लासिफिकेशन बनाते जाएगा। देन एनी प्रोसेस ऑफ रिवेस्कुलराइजेशन और इन्वेजिव, अपने देखो कॉर्नरी एंजियो है, पीसीआई है, कैबेज है, ये सारे पॉइंट्स आपको पहले ही चाहिए मरीज को जज करने से पहले। अगर है तो विद इन 12 मंथ और आफ्टर 12 मंथ्स, और फिर उसमें आपकी अपनी विजडम होनी चाहिए। वॉज इट अ कंप्लीट रिवेस्कुलराइजेशन और incomplete with some residual disease there or not, or just angiogram, no intervention? So reason for that, why? कि आपको जवाब, जैसे आपने किसी की कॉर्नरी एंजियो लिख दी है, कोई इंटरवेंशन नहीं हुई है, तो मुझे फौरन होगा कि उसकी 2VD या 3VD में क्या वजह थी कि उसको, या तो आपने वो एंजियो पे लिख दिया नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, तो समझ में ही आ जाएगा। ये जवाब आप अपने आप को दें मरीज को जज करते हुए। कोई कहता है कि मेरी 4 साल पहले एंजियो हुई थी, अब आपका अगला सवाल है एंजियो के बाद आपको क्या कहा था, व्हाट वाज द प्लान आफ्टर दैट कॉर्नरी एंजियो प्लान, या आप वो सीधी, और ये कहानी बनती फिर उसी तरीके से कि आप प्राइम सिम्टम से शुरू करके हर मरीज के आज के दिन का एक पूरा लॉग अपने जहन में बना लें प्रायर टू ट्रीटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेटेजी। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया, वी डोंट मेक इट, वांट टू मेक इट more longer, but few points are important when you are assessing your patient. So if we just conclude things, what are those points? First is symptom, and in symptoms you want to judge, is your patient having ischemic symptom or not? If having, what's the severity? ये पहली चीज आपको जज करनी है। अभी हमने इसको साथ, इसके साथ अभी सिर्फ हम एक ही मसाला डिस्कस कर रहे हैं, वरना अमूमन डिश में 4-5 मसाले होते हैं, यानी additional comorbids as well. Most of our patients have heart failure, rhythms issue, valve वो साथ होते हैं उनके, वो एक अलग कहानी फिर बढ़ जाएगी। Today we are discussing just ischemia, but in ischemia first step history for making an impression of pre-likelihood of disease. Is it ischemic or non-ischemic? If ischemic, symptom status, ACS और CCS, और CCS में सिवियरिटी। ये आपके दिमाग में एल्गोरिदम बना हुआ होना चाहिए जब आप ओपीडी में कोई मरीज देख रहे हैं। समटाइम अ पेशेंट केम एंड ही सेइंग, एक हफ्ते पहले मुझे शदीद दर्द हुआ है, तो दिस इज नॉट CCS। वो आया आपके पास CCS की तरह है, बट ही इज ACS। So you have to judge then his risk of ACS and separate algorithm. उसके बाद क्या है, रिस्क फैक्टर्स, उसके सारे रिस्क फैक्टर को जज करना है, एंड द स्टेटस ऑफ कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर, एंड लाइफस्टाइल एज ए जर्नल, फिजिकल एक्टिविटी, डाइट्स, ये सारी चीजें, एंड देन यू हैव टू मेक अ प्लान फॉर दैट एज वेल। ये दो चीजों के साथ साथ क्या क्या चीजें जो इम्पोर्टेंट चाहिए, हमारे मरीजों ने अपने सारे वो ये रिकॉर्ड इधर उधर के, तो आपको क्या क्या चाहिए? एको पे अभी हम नहीं आए, एको की भी मैं बात करता हूँ क्यों करते हैं। एनी प्रीवियस प्रोसीजर्स, और उसमें आप क्या लाइन लगाना चाहते हैं, 12 महीने से पहले या 12 महीने के बाद? बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप को फैसला करवा के रखेंगे ये 12 महीने के अंदर का है, बाद का है, और फिर उसका स्टेटस प्रोग्रेसिवली। और वो जब आप जज करेंगे तो सारी चीजें जज करनी कि प्रॉपर रिवेस्कुलाइजेशन हुई, नहीं हुई, पार्शल हुई, मरीज ने डिक्लाइन कर दिया, लॉस टू फॉलोअप हो गया, तो वो ताकि आप एक तस्वीर अपनी आगे बनाते जाए। उसके बाद एको की बात आई। व्हाई यू डू एको इन पेशेंट्स हु इज कमिंग विद चेस्ट पेन? See the alternate diagnosis. That's one. When you are unclear about diagnosis, echo will help you in giving an alternative diagnosis, which is commonly AS or hukam, or sometimes you may find some additional thing. एक तो ये हो गया, और why you do echo? Very good.
to see segmental wall abnormality, which is again a guide towards any Ischemia. previous ischemic event, and then you correlate that event with history कि भाई 2 साल पहले मुझे दर्द हुआ था, मैं कहीं गया था, दाखिल नहीं किया था, मैं ईसीजी करके छोड़ दिया था, एंड समथिंग इन ईसीजी इन रिलेशन टू दैट वॉल मोशन. 2 चीजें हो गई. और व्हाई यू डू एको? Ejection fraction, which guides you patient risk status. A patient who's already LV dysfunction with severe ongoing angina, a very high risk patient, needs something as early as possible. And then nowadays we have marginally reduced EF and even improved HFpEF. EF, HFpEF. So you judge these categories as well. कि कहीं उसको Recategorize HFpEF तो करना. नहीं है, HFrEF तो नहीं है. And now we have CMR as well. So when you are unclear in echo, or echo is not guiding you towards exactly or giving some hints but not giving definitive diagnosis, then you can augment your information with CMR as well along with echo. So now I believe in next, I think you won't be here in next board room. We both are here. You both are here, okay. So want you, whoever is listening, convey to your juniors to judge these important points. देखिए ये छोटे छोटे एल्गोरिदम डिफरेंट क्लिनिकल सेटिंग के आप अपने जहन में बनाते जाएंगे कि वो वोंट मिस थिंग्स विच हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मैनेजमेंट. और ये एल्गोरिदम प्री सेट माइंड में, और ये आपको एग्जाम कुछ नहीं होता, एग्जाम यही दिखाता है कि आपकी ये अप्रोच कैसी है, कि आप पर्टिनेंट थिंग पॉजिटिव या नेगेटिव मुझे बताते हैं या नहीं बताते. और फिर अभी मैं तो कोमॉर्बिड पे गया ही नहीं हूँ. जैसे अभी स्ट्रोक की बात हो रही थी, भाई स्ट्रोक किसी को आप बयान कर रहे हो और ये नहीं बता रहे इस्केमिक या हेमरेजिक, और ये नहीं बता रहे कि अब रेजिडुअल वीकनेस क्या है, तो आपकी इसका मतलब है आपका थॉट प्रोसेस है ही नहीं पेशेंट की मैनेजमेंट का. क्योंकि वो सब कुछ आपको आगे के लिए गाइड करेगा ना. एक पेशेंट जिसकी 0 पावर है और एक पेशेंट जो फुली रिकवर किया है, दोनों का मैनेजमेंट प्लान अलग होगा. तो वो जब आप प्रेजेंट करते हैं तो उससे हमें ये अंदाजा होता है कि आप जज भी करते हैं. So that's important.